Hello, dear children. Today in EVS we will do lesson number 15, Disaster and Rescue. A very good morning to all my dear lovely students. Hope you all are fine. Today in the EVS we are going to start a new lesson, that is your lesson number 15, and the name of the lesson is Disaster and Rescue. All of you will first write today's date 27 to 2021 and classwork. This is on page number 108. Now there are two things, disaster and rescue. These are all the two new words that the meaning of which we are going to learn in this lesson. What is the meaning of disaster? Certain disasters are man-made and certain are natural disasters. Disasters कई तरीके के होते हैं, जैसे कुछ जो हम इंसान खुद अपने तरफ से बनाते हैं या हमारे से हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जो कुदरती होते हैं, उनको हम नेचुरल डिसास्टर्स कहते हैं। और उन डिसास्टर में से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, या और लोगों को जो उस डिसास्टर में फंसे हुए हैं उनको कैसे हम रेस्क्यू कर सकते हैं, उनको उनमें से बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रेस्क्यू. हाउ टू take those people out of that disaster, that means उनको बाहर निकालना, उनको सुरक्षित रखना, keeping them safe, that is the rescue. Now disaster are of many types, जैसे कि man made और natural बोला, तो man made disasters like accident happens, riot happens, or some terror attacks are there. These are all the man-made disasters. Natural disasters, tornadoes, hurricanes, storms, flood, tsunamis. So these are all the नेचुरल डिसास्टर्स. ये सारे डिसास्टर्स नेचुरल होते हैं, जो कि कुदरती आफतें जिनको हम बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द नेचुरल डिसास्टर्स. नाउ फर्स्ट वी विल रीड दिस. वी सी and hear about many events happening around us. Vehicular accidents happen, or a child falls off while flying the kites. Somewhere a fire may break out. Sometimes there are floods, earthquakes, cyclones, or some other disasters. Such events can damage to a personal and public property. Sometimes loss of lives also occurs due to such disasters. Now we have heard about many things happening all the time around us. Accidents are very common, and people dying in the accident is also now become very common, because there are so many vehicles around on the road, and the roads have become small, and the number of vehicles have become more. People go in the speed they don't see, and even the people who are walking, they don't walk on the footpath, they walk between the roads, or sometimes the children play on the road. They fly for the kites, they fly for the toys. They run for the toys. So on the street, or while they're playing, they play on the street and run here and there without looking at the vehicles that are coming. So accidents have become very common now. So it's a one type of disaster that we can call it as the man-made disaster. Then if sometimes a child falls from the terrace while he's flying the kite, he doesn't know that where he is going. वो kite उड़ाने में इतना ज़्यादा वो होता है कि उसका ध्यान जो है वो होता ही नहीं कि वो किस तरफ जो है टेरेस में चल रहा है, या पेड़ से गिर जाना, साइकिल से गिर जाना, स्कूटर से एक्सीडेंट, बाइक से, कार से accident. These are all the man-made disasters. Natural में, as I told you, tornadoes है, cyclones है, earthquakes are there, tsunamis are there, floods आते हैं, या किसी तरीके, ये सारे जो disasters होते हैं वो natural disasters होते हैं. और इसमें बहुत बार ऐसा होता है, natural disasters में there is a loss of life and property, both the things, even property gets damaged and lives of many people are lost. Many animals जो होते हैं, कितने animals हैं, birds हैं, insects हैं, ये सारे चीज़ों के भी जो है loss होता है, life of their loss also occurs. तो डिज़ास्टर्स जो होते हैं हमेशा जो है, दे आर बैड बिकॉज दे टेक द लाइव्स ऑफ many people, animals, birds, everything. They destroy many things around us. Now here there is a picture, observe and see. There is a picture here. देखिए ये पूरा नदी के अंदर जो है, ये जो है इसके में तैर रहे हैं. अब अगर इसमें से कोई एक्सीडेंट होता है, ये तैरते तैरते देखिए ये पानी में डूबने लगा, ये गाय के ऊपर बैठा हुआ है और इसके ऊपर जो है, अब देखिए गाय डूबी तो इसके साथ ये बच्चा भी डूबने लगा. सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ डिसास्टर विच इज़ मैन मेड. मतलब ये हमारी गलती की वजह से जो है ये एक्सीडेंट होता है, विच इज़ मैन मेड.
नाउ थिंक एंड से कैन यू सी एनी डिजास्टर इन दीज पिक्चर्स। अब यहाँ पर जो है वो डिजास्टर ही है क्योंकि ये बच्चा जो है पानी के अंदर डूब रहा है। इफ़ देयर आर फ्लड्स इन द विलेज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन अकर। अगर बाढ़ आती है, पानी अगर नदी है गांव के आसपास और उसमें बाढ़ आती है, फ्लड मीन्स बाढ़ आती है, तो किस तरीके की तकलीफें आएंगी। एक तो जो नदी में जो पानी का लेवल है वो बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे नदी के अंदर पानी का लेवल जो है बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, दैट वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग इन टू द विलेजेस, इट विल गो इन टू द fields that are nearby the river। जो खेत है नदी के आसपास उसके अंदर पानी भर जाएगा तो स्टैंडिंग क्रॉप्स गेट्स डैमेज, एंड देन slowly it will start getting into the villages. If it is a low lying area, the water will get clogged or the water will start entering the house of the people. So there is a loss of life and property, both things, even the crops are also get damaged. So there's a lot of loss if the water enters the villages. What damages are caused due to floods, as I explained also. What is the, when is a situation, when is such situation seen, जब बहुत ज़्यादा, when there's a very heavy rain and the water from starts increasing, how does the water level in the river increase। एक तो जो गांव का पानी है वो अगर नदी के अंदर सब इकट्ठा होता है, अदरवाइज तो और जो नदी होती है वो आगे और किसी नदी से कनेक्टेड होती है और उसका भी पानी जो है वहाँ भी बहुत ज़्यादा कैचमेंट एरियाज होते हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश आती है और पानी उसके अंदर इकट्ठा होता है, वो भी आगे बहकर इन गाँव की तरफ आता है, तो जो है situation will worsen। Now we move on to page number 109. Through various questions, we have come to know that the occurrence of a flood is a disaster. We have to face a lot of problems during such disasters. अब जब flood आता है तो it not only carries away with it the many things, but also there's a lot of loss, as I said, कि जो खेतों में खड़े फसल होती है वो ख़त्म हो जाती है, लोगों के घर के अंदर पानी घुस जाता है तो उनके घर की सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। They cannot live in that house. Sometimes the people have to be moved from their homes to the safer places also। जो ज़्यादा ऊंचे इलाके होते हैं जहाँ पानी नहीं आ सकता वहाँ उनको शिफ्ट किया जाता है। तो उनके जो गाँव में मोस्टली पीपल हैव सम एनिमल्स एट होम, तो वो एनिमल्स उनको वहाँ छोड़ के जाने पड़ते हैं। दोज एनिमल्स ऑल्सो गेट वॉश्ड अवे विद दैट वाटर। तो बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जो वहाँ पर होती हैं डिज़ास्टर के, इस फ्लड की वजह से। सो फ्लड itself is a disaster. Now here you can see there are three pictures here. One, this is of storm, this is of fire, and this is of a girl getting ill. Now disaster में fire is of two types. One is the fire जो house घर के अंदर लगती है, that is the fire, so that is because of the negligence of carelessness of the people living in that area। और उस घर के अंदर या उसके आसपास के एरिया में कहीं भी आग लगती है तो that is just purely because the negligence and carelessness of the people that the house catch fire or some building catches fire। But there's another type of fire, that is the forest fire। You might have heard at many places that कि जंगलों में आग लग गई, तो that jungle of is a natural process because the heat increases and somehow they catch the fire। कोई भी ऐसी चीज़ होती है वहाँ उड़ती उड़ती शायद जलती हुई छोटा सा भी तिनका आ जाता है, तो क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे सूखे पत्ते और पेड़ पौधे होते हैं, इट कैचेस फायर वेरी इजीली। सो फॉरेस्ट फायर इज़ अ नेचुरल डिजास्टर, वेयर एज द फायर इन द हाउस इज़ अ मैन मेड डिजास्टर बिकॉज इट इज़ जस्ट कॉज बिकॉज ऑफ आवर केयरलेसनेस। नाउ यू कैन सी हियर स्टॉर्म इज देयर। अ स्टॉर्म हैज अकर्ड, सो मेनी ट्रीज आर अपरूटेड। जब बहुत ज़्यादा आंधी, तेज़ आंधी होती है तो या तूफान आता है तो क्या होता है, बहुत सारे पेड़ जो है वो अपरूटेड मीन्स गिर जाते हैं। फिर जो कच्चे मकान होते हैं उनके जो छतें होती हैं वो उड़ जाती हैं, टीन के शेड्स होते हैं वो उड़ जाते हैं और बहुत सारे मकानों को भी डैमेज हो जाता है। इट डैमेजेस ह्यूमंस एंड एनिमल्स बोथ कैन गेट इंजर्ड इन द स्टॉर्म। उसके बाद जैसे हाउस ऑन फायर है तो ऑल द बिलोंगिंग्स इन द फायर हाउस गेट्स डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द फायर। इफ सम पीपल हैज़ गॉट स्टक इन द फायर देन ऑल्सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू टू कम आउट। समटाइम्स इट कैन बी फेटल ऑल्सो, इट कैन कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज इनसाइड देयर because there's a lot of smoke that gathers inside the house when so much of fire is there in the house. Now fire in the house can be caused mainly because of two reasons, either because of the leakage of gas or because of some short circuit that can occur in the electrical lines. So these are the two reasons by which the house gets catches fire. Then next is this is the girl who is admitted in the hospital because she is suffering from a stomach ache, and the doctor is examining him and then he will tell that what treatment is to be given to the girl. Now this can happen because of the eating the food outside। बाहर का खाना खाने के बहुत बार ऐसा हो जाता है because sometimes the stuff is not good and we eat it, so that times we fall ill। So this is a man-made disaster।
Now moving on to page number 109. Here again there's an observation. You can see 4 pictures are there, 1, 2, 3 and 4. A boy is walking on the road here, you can see, and a car is coming from the opposite side. Here you can see another child who is walking on the footpath. Now dear children, when you are on the road, when you are walking on the road, always walk on the footpath. If footpath is not there, then walk on the side of the road. Never walk on the middle of the road. मतलब रास्ते के बीचों बीच कभी भी आपको चलना नहीं चाहिए. अगर फुटपाथ है तो always walk on the footpath. If footpath is not there, then walk on the side of the road and see that the vehicles are coming, doesn't go close by you. तो आप बिल्कुल रास्ते के ऐसे साइड में चलिए जिससे कि कोई भी व्हीकल निकलता है तो आपको तकलीफ ना हो या किसी भी तरीके का एक्सीडेंट ना हो. अब यहाँ पर देखिए बच्चे की केयरलेसनेस है, वो रोड के बीचों बीच चल रहा है, सामने से गाड़ी आ रही है, उसने ध्यान नहीं दिया एंड ही क्रैशेस डाउन और इस तरह से उसको चोट लग जाती है. तो ये जो होता है वो केयरलेस एटीट्यूड होता है कि हम रास्ते में बीचों बीच चलते हैं और हम सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं होगा, अगर गाड़ी आती तो गाड़ी वाला हटेगा, हम नहीं हटेंगे. दैट इज़ रॉन्ग. इफ़ यू आर वॉकिंग, footpaths are meant for the people to walk so that they walk safely. और vehicles जो होते हैं, because they are speeding vehicles, sometimes it's very difficult to put a brake or to control the vehicle and accidents can happen. So the same thing has happened with the boy, that the accident has taken place because he was walking on the road. Now how does this accident happen? Because of the boy was walking on the road and which was not proper. तो ये जो था वो प्रॉपर नहीं था, इस वजह से जो है रोड में, और वो फुटपाथ में नहीं चल रहा था, रोड के बीचों बीच चल रहा था, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया. नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स अराइजेस ड्यू टू एक्सीडेंट? एक्सीडेंट की वजह से कि उसको चोट लग गई तो उसको सो मच ऑफ ब्लड इज ऊजिंग आउट ऑफ हिज बॉडी. तो कभी कभी इसमें देखिए पैरों में चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, एंड समटाइम्स द एक्सीडेंट्स आर वेरी फेटल. इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन ऑल्सो. नाउ मेंशन सच एक्सीडेंट्स. अदर एक्सीडेंट्स में जैसे वॉर्स हो गए, कम्युनल राइट्स हो गए. मतलब कम्युनल राइट्स मीन्स जो दंगे होते हैं धर्म के आधार पर, जो रिलीजियस दंगे होते हैं, दैट इज योर कम्युनल राइट्स होते हैं. रोड एक्सीडेंट्स होते हैं. फेस्टिवल में बहुत बार कोई फेस्टिवल हो रहा हो, कुछ फेयर्स लगे हों, उसमें कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या टेरर अटैक्स होते हैं ऐसे, या फिर कोई बच्चा पेड़ से गिर गया. दीज आर सम ऑफ द एक्सीडेंट्स दैट कैन अकर. नाउ नेक्स्ट हियर इज द ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव टू राइट. जैसे कि ये बच्चा पिक्चर, यू हैव टू सी द पिक्चर एंड राइट हियर फ्यू सेंटेंसेस, ऑब्जर्व एंड राइट, विच इज ऑन पेज नंबर 111. नाउ दिस चाइल्ड इज रनिंग आफ्टर द काइट. ही इज रनिंग इन बिटवीन द रोड. ही इज नॉट सीइंग दैट अ कार इज कमिंग. अगर वो ध्यान नहीं देता है और गाड़ी वाला भी अगर स्पीड में आ रहा है तो डेफिनेटली एक्सीडेंट इज गोइंग टू हैपन. तो ऐसी चीज़ें हमको बिल्कुल भी रोड पे नहीं करनी चाहिए. फिर आप यहाँ पर देखिए द बॉय है, उसके हाथ में से जो मिल्क है, मिल्क का कप है, वो गिर जाता है और शायद उसका हाथ भी जल जाता है, क्योंकि गरम गरम दूध अगर हाथ पे गिरेगा तो ऑब्वियसली उसका हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो दूध में शायद चीनी या शुगर लेने के लिए वो स्टूल पे चढ़ा होगा और एक कोई कंटेनर ले रहा होगा. बाय द टाइम ही माइट हैव स्लिप्ड और इस तरीके से दूध उसके हाथ से गिर गया और उसका हाथ में जो है गरम गरम दूध गिर गया, उसको चोट लग गई. Now here it is also a man-made disaster कि with a wet hand this girl might be trying to switch on. गीले हाथ से लाइट चालू करने की कोशिश कर रही है, उसमें उसको शायद करंट लग गया. अगर ऐसा भी हो सकता है कि हाथ गीला ना हो लेकिन जो केबल्स हैं इंसुलेशन किया हो, that might not have been done properly, so that also may be result of the leakage of the current, and when she touches the board she got an electric current. So moving on to page number 112 now. Number 112, read. We hear about various accidents. We must have seen such events on television and newspapers. Now ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में, वेरियस एक्सीडेंट्स के बारे में हम न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन में देखते हैं. रोड एक्सीडेंट हुआ या टेरर अटैक हुआ, राइट्स हुए, एवरीथिंग वी सी ऑन द टेलीविजन एंड रीड इन द न्यूज़पेपर. दिस इज क्वाइट कॉमन. सच रिपोर्ट्स ऑलवेज कम इन द न्यूज़पेपर. Victims of such accidents sometimes lose their lives, sometimes there's a great damage. Such events are called as the disasters. Now इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं एक्सीडेंट जो नेचुरल होते हैं, जैसे टर्नेडो हुआ, हरिकेन हुआ, साइक्लोन है, फ्लड है. एज वी ऑल नो दीज आर द नेचुरल वंस जो होते हैं, उससे तो होता ही है लॉस. बट जो मैन मेड डिसास्टर्स होते हैं लाइक द रायट्स है या और and then terror attacks, and that they also take the lives of many people and they destroy the property. ऐसा नहीं है कि natural disasters में ही जो property का loss होता है या lives का loss होता है. It's the loss of property and life also occurs in the human man-made disasters also. Now here's a small story. Once there lived a man named
Amrit Bhai Patel during a monsoon once. Patel came back from his farm. Night fell, it was raining, and it continued throughout the night. The village pond got filled up completely. Now, एक village की story है that there lived a man named Amrut Bhai Patel. He was living in the village, and one day, while he came back from his farm, and at night it started raining and continued raining throughout the day, whole night. Now, the pond was completely, because in the villages the size of the ponds are so small that if one day, a whole night, if it rains, then the ponds get completely filled. So in their village also the pond got completely filled. Due to such an increase in the water, the pond overflowed. The water from the pond entered the whole village. There was water and dirt everywhere. The water remained in the village for 2 to 4 days. Amrit Bhai saved many lives. अब क्या हुआ, पानी पूरा पॉन्ड भर गया, तालाब भर गया, एंड इट स्टार्टेड ओवरफ्लोइंग, एंड इट स्टार्टेड एंड वंस इट स्टार्टेड ओवरफ्लोइंग, द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड स्टार्टेड एंटरिंग द विलेज. सो एवरीवेयर इट इज जस्ट व्हेन द रेन वाटर और द फ्लड वाटर्स एंटर्स एनी पार्ट ऑफ द सिटी, स्टेट, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, या कोई भी विलेज है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसके साथ बहुत सारी अपने साथ गंदगी भी साथ में लेकर आता है. तो चारों तरफ वो पानी भर गया और उसके साथ बहुत कुछ गंदगी भी, उसके गंदी चीज़ें भी, कचरा कूड़ा सब उस पानी के साथ बहकर गांव में आ गया. और वो पानी 2 से 4 दिन तक पूरे गांव के अंदर भरा रहा, और फिर उसके बाद जो है वो पानी कम हुआ. इस बीच में बहुत सारे लोग जो है गांव में फंस गए थे फ्लड्स में. तो अमृत भाई ने बहुत सारे लोगों की मदद की और उनकी जान बचाई. So generally natural problems are called disasters. So what are disasters? The disasters which are natural, which is not because what we do and it occurs is accident, but what is natural is called as the disaster. जैसे पूरी रात continuous for 3-4 days it rains, then everywhere you can see the water logging because there's no place for water to go, and so much of water is there that it takes a lot of time to recede that water. Once it stops raining, then to after 4 or 5 days you can see the water receding slowly. Because of the disasters, property suffers a great loss, and therein is a loss of lives also. People have to face various problems. Now, once this natural disaster occurs, it is not only that loss of life and property occurs, but the people who are there, who are living there, also in that area, particular area, have to face many problems. Like they cannot move out of the house. If you are going for a work, you cannot go out for the work. Then you cannot get the foodstuffs that we get. Vegetables you cannot get. Many times you don't get milk. Electricity is not there. Even you are surrounded by water everywhere, but you don't have drinking water. So these are the basic. No light, nothing is there, no light, no food, no water, nothing. And even because of that water logging, many diseases start spreading. तो एपिडेमिक होने का भी डर रहता है, क्योंकि भरे हुए गंदे पानी के अंदर बहुत सारे जो है मच्छर है और बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है वहाँ रहने लगते हैं, और उससे बहुत सारी बीमारियाँ भी गंदे पानी के अंदर से फैलने लगती हैं. तो एक तरफ बीमारी होने का डर रहता है, दूसरी तरफ पीने का जो है एकदम क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, देन फूड स्टफ्स इज़ नॉट अवेलेबल, लाइट इज़ नॉट देयर, मेडिसिन आर नॉट अवेलेबल. तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. हमको ऐसा लगता है कि फ्लड हुआ और थिंग्स हैव आफ्टर द वाटर रिसीड, बट इट इज़ नॉट दैट. आफ्टर द वाटर रिसीड्स ऑल्सो बिकॉज से सो मच ऑफ डर्ट एवरीवेयर. तो उसके साथ इतना कूड़ा और कचरा आता है बारिश के साथ कि पूरा जो है वो एरिया एकदम जो है गंदगी से भर जाता है, और इतनी मिट्टी साथ में बहकर आती है कि अगर जिनके घरों के अंदर पानी भर जाता है तो उनका पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो जाता है, उनका सारा सामान खराब हो जाता है पानी के अंदर डूब के. तो उनको उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं. और अगर आपके घर के आसपास कोई फॉरेस्ट एरिया है तो बहुत बार जो है स्नेक्स है, क्रोकोडाइल्स है, दोज एनिमल्स विच लिव इन वाटर, दे ऑल्सो कम अलॉन्ग विद दैट वाटर. तो वो जो स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स भी साथ में बहकर कभी कभी लोगों के घर तक आ जाते हैं. तो ये ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती हैं कि जो आपको फेस करनी पड़ती है नेचुरल डिजास्टर्स में. बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होगा तो ऑब्वियसली द फॉरेस्ट एरिया, इफ इट इज़ क्लोज टू योर प्लेस, तो एनिमल्स ऑल्सो, बिकॉज इन द फॉरेस्ट ऑल्सो वाटर, वंस द वाटर स्टार्ट्स लॉकिंग, तो एनिमल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑल्सो कम आउट एंड दे ऑल्सो कम इन द सिटी एरिया. तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है. तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इस डिजास्टर्स में हमको फेस करनी पड़ती हैं. Now think and write
Disaster we have heard about is the floods. Disaster we have seen is the tsunami. And disaster we have experienced is the storm. Tsunami देखा हुआ है, floods के बारे में सुना हुआ. अगर tsunami आएगी तो floods तो आएंगे obviously, because the water will get into the city because it's huge tide. Tsunami जो होता है, it's the normally it is generated in the sea because of the earthquake that happens in the surface of the sea. उससे high tides होते हैं, and the tides can go up to the height of 2 floors. इतने ऊंचे tides होते हैं. So the water from the sea starts coming into the city और town के अंदर enter होता है. Now there is another story over here.